हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिडवीक मार्केट अपडेट। देखिए, अगर निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ देखा जाए तो नीचे से फ्रॉम द रीसेंट बॉटम हम ऑलरेडी 4.74 यानी कि करीबन 5% जैसा पुल बैक दे चुके हैं। और अभी भी जो ट्रेंड के हिसाब से मैं बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी वी आर लुकिंग प्रीटी नाइस। वी आर इन एन अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करेक्शन जो भी रिसेंटली हुआ है, ऑलमोस्ट लिटिल बिट मोर देन 11%, ये जो करेक्शन हुआ है इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड नीचे आने की काफी ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करें इस पर्टिकुलर करेक्शन को विथ दिस करेक्शन विच वाज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन और दिस वन ऑन स्पेशली दिस वन 2022, ये सब करेक्शंस में मार्केट ऊपर नीचे करके नीचे आया है। इवन दिस वन एंड स्पेशली 2022, ये तो पूरा साल ही ऐसे चला था। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये एक कंसोलिडेशन है बेसिकली। सो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं, एक ही चीज जो मुझे पसंद नहीं आई, द स्पीड विथ विच मार्केट हैज करेक्टेड। हालांकि नीचे से पुल बैक जरूर हुआ है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग दैट जो भी करेक्शन हुआ लिटिल बिट मोर देन 11%, आई थिंक 11.74% निफ्टी फ्यूचर्स में हुआ था, वो काफी स्पीड से हुआ था। एंड गुड थिंग इज हमने नीचे से काफी अच्छा पुल बैक भी दिया है। एंड दिस पुल बैक हैज हैपेंड बिकॉज आरएसआई वाज जस्ट अंडर 30, ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट। देयर वेर सर्टेन अमाउंट ऑफ सपोर्ट्स आल्सो व्हिच केम अप इन निफ्टी फ्यूचर्स, स्पेशली दिस 38.20% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, बट वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे था एंड वीकली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस मार्केट हमेशा उसको रिस्पेक्ट करती है। Now coming to the daily time frame chart where the real magic is happening. So far so good. I think ये जो पहला दिन था pullback का, you can say on the 22nd, which was a superb day for a very big pullback. देख के ऐसा लग रहा था मार्केट बहुत स्पीड में काफी ऊपर चला जाएगा। दूसरे दिन भी हमने पुलबैक किया। आई थिंक वी ओपन समवेयर नियर, यू कैन से 24,270 और 280, एंड अगेन वी क्लोज्ड ऑन द सेम डे। वी मेड अ डोजी ओवर हियर। उसके बाद हमने एक बिग बिग तो नहीं बोल सकता, एक स्मॉल रेड कैंडल बनाया और आज भी जो कैंडल बनाया है विच इज अ स्पिनिंग टॉप। सो रीसेंट प्राइस एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि आफ्टर द इनिशियल पुलबैक, स्पेशली इनिशियल पुलबैक, ये जो 2 दिन है नीचे से भी थोड़ा सा पुलबैक आया है, बट ये जो हो रहा है लास्ट 3 दिन में, दिस इज नथिंग बट अ साइडवेज कंसोलिडेशन फेज विच इज हैपनिंग। अगर इसको और थोड़ा सा नजदीक से देखना है तो यू कैन जस्ट गो टू वाले टाइम फ्रेम चार्ट्स एंड यू कैन सी दैट निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, थक रहा है। क्यों? बिकॉज द रीजन इज यहाँ पे एक पूरा बैंड है रेजिस्टेंस का। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। मैं इसके कोऑर्डिनेट शेयर करता हूँ सबके साथ। इसके लेवल्स हैं 24,600 से लेके 24,252, यानी कि 24,600 से लेके 24,250। ये एक पूरा बैंड है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नाउ समझिए, इनकेस अगर निफ्टी इसके ऊपर सरपास कर लेता है अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल विच इज द, यू कैन से अ शॉर्ट टर्म हाई, देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एक स्टिफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो निफ्टी को शायद रोकेगा ऊपर जाने के लिए, वो होगा 25,000 से लेके 25,225, यानी कि 25,000 से लेके 25,225 समवेयर हो हियर। बट ये लेवल आने से पहले ये पूरा बैंड सरपास होना जरूरी है। सो आई थिंक वी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग। अभी भी हम सिर्फ एक पुल बैक मोड में है। एंड रेदर देन गेटिंग टू मच एक्साइटेड, आई थिंक हमको थोड़ा सा सिर्फ निफ्टी देखने के अलावा थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि पता चले कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी, बिफोर गोइंग टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। I would like to share with you 2 data points. One is this. See this data point. See this data point. ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा कम है बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे करके ऊपर जा रहा है। और अगर आप ये वाला देखें, अभी लास्ट कुछ महीनों में, लास्ट 6 मंथ्स में, एक्चुअली बैंक निफ्टी हैज डन नथिंग।
इन लास्ट 6 months इट हैज जस्ट कंसोलिडेटेड, साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये सेम कंसोलिडेशन हमको थोड़ा मैग्निफाइड लेवल पे दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। आपको वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में काफी ऊपर नीचे ऊपर ये कंटिन्यूसली आपको दिखता रहेगा, एंड ऑल ऑफ योर लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स भी टूटेंगे, वापस रेजिस्टेंस भी टूटेंगे, एंड सेम थिंग यहाँ पे और ज्यादा दिख रहा है। सो आई थिंक रेदर देन एनालाइजिंग बैंक निफ्टी विच विल गो इन वेन, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रेंज में है। पहले ये सपोर्ट तोड़ दिया, जैसे ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गए, नाउ अगेन वी आर एट अ रेजिस्टेंस। So it's whenever market is in a choppy environment, यानी कि मार्केट जब भी एक साइडवेज, या जिसको मैं ज्यादातर कैंगरू मार्केट बोलता हूँ, साइडवेज मार्केट में होता है, जनरली आपके लेवल्स उतने काम नहीं आते, एंड इट इज बेटर टू लीव दैट मार्केट। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड ना करने के बजाय किसी और इंस्ट्रूमेंट पे जाया जाए, यानी कि इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइवेट बैंक्स जस्ट एज स्टॉक्स, तो शायद आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि मैंने एक स्टॉक शेयर किया था आप सबके साथ, दो स्टॉक्स इनफैक्ट शेयर किए थे। एक था आईसीआईसी बैंक, मैंने क्लियरली बोला था ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा इन शॉर्ट टर्म, सो इट हैज गॉन अप, बट यस ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, 1314 15 टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आया है 1% के करीब, बट यस इट हैज बीन एबल टू गो अप लिटिल बिट। दूसरा जो मैंने शेयर किया था वो था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हैज कंटिन्यूड टू रैली ऑन द अपसाइड। सो अगर आप बैंक निफ्टी के बजाय उसके स्टॉक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट। नाउ गोइंग अहेड, ये दो स्टॉक्स के ऊपर मेरी नजर थी। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, बिकॉज मुझे वहां पे कुछ भी ऐसा शेयर करने जैसा नहीं लग रहा है। गोइंग अहेड में अगर पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करूं, देखिए पीएसयू बैंक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। लुक एट दिस पर्टिकुलर प्राइस बिहेवियर, व्हाट इज दिस, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ऊपर से सीधा नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस। व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज नथिंग बट दिस इज रिफ्लेक्टिंग दैट कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन द लास्ट 2 months इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, और ये मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका असर हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे, और वीकली टाइम फ्रेम से ये जो चॉपीनेस है वापस आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम चार्ट। इसके लिए मैंने स्पेशली कलर्स चेंज करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन पीएसयू बैंक्स। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करूं, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स ओवर ईयर, बट ध्यान से देखिए डेली टाइम फ्रेम चार्ट को, कोई भी स्टॉक जब एक अप ट्रेंड में होता है तो generally speaking it will never break its previous low, and it will continue to go higher even over here, continue to go in short term uptrends, but this was not broken. Okay, now what is happening over here, यहां पे देखिए आप, what is happening, up down, यानी कि पहले ये वाला लेवल टूटा, नया हाई क्रिएट किया गया, फिर ये वाला तोड़ के नया लो क्रिएट किया गया। So overall, it is just going sideways. It makes sense to stay away from such stocks because it will be difficult to analyze and have some meaningful decision कि इसको शॉर्ट किया जाए या लॉन्ग किया जाए। इसके बजाय अगर आप दूसरे स्टॉक्स को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, हाँ यहाँ पे भी आपको हल्का सा आपको साइडवेज मूवमेंट मिलेगा। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू यू, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, but still in the daily time frame chart it is tradable, I can say why, because so far so good। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडर है, तो उसको यहाँ पे उन्होंने फायदा उठाया रहेगा टू प्रोबेबली सेल ऑन द डाउन साइड। इफ यू हैव अ लुक एट महाराष्ट्र बैंक या आप सेंट्रल बैंक को देखिए, सो थिंग्स आर लिटिल बिट कंट्रोलेबल, बट बैंक ऑफ बड़ौदा वाज अ टोटली डिफरेंट बीस्ट। Even SBI is a totally different beast, I can say it's extremely choppy। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये देखिए यूनियन बैंक में क्या हो रहा है, यूनियन बैंक में अगर आप ध्यान से देखें तो यूनियन बैंक ऊपर से नीचे आया, इट वेंट अप, मेड अ लोअर हाई, बिकॉज ये वाला जो लो था पिछले
सॉरी ये जो हाई था पिछले हाई से नीचे था एंड देन इट वेंट डाउन. आफ्टर गोइंग डाउन इट ट्राइड टू कंटिन्यू, प्रॉब्ली यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट उसको मिला होगा and it has surpassed its previous high. So again some choppiness is happening. Now there are two things over here. One, is it only sideways or is it that the entire sector PSU banking pack has consolidated in the monthly time frame chart and it's trying to probably start a new bull run or whatever? So I think for that only time will tell. So you have to be very, very careful. You have to be extremely careful, not very, very careful, but extremely careful before you take any sort of view on PSU banking pack. Initial, yes, हमको थोड़ा सा फायदा हुआ in stocks like Central Bank and Maharashtra Bank and maybe in stocks like PNB where we got this chance to probably go swing short on these trades. But now just be a little bit careful. And सबसे important चीज है कि ध्यान रखिए कि इज इट हैपनिंग इन ऑल द स्टॉक्स. जैसे कि यहाँ पे मैंने करीबन 6-7 स्टॉक्स देख रहे हैं, तो 6 में से क्या 5 स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाई को पार करके ऊपर जा रहे हैं? ये एक चीज है जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. नाउ गोइंग अहेड, एनर्जी पैक, मैं बोलूंगा कि एनर्जी पैक जो है आई थिंक मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में 38.20% रिट्रेसमेंट पे इसको सपोर्ट मिल रहा है. एंड इफ यू चेक ओवर हियर, from here I think it's trying to retrace its previous short-term downtrend and RSI has also gone below 30, in fact below 25. So chances are that ये pullback थोड़ा और ज्यादा continue हो सकता है in the energy pack. Stocks की तरफ हम ध्यान दें तो I think GAIL is in a pullback mode. हिंद पेट्रो काफी pullback कर चुका है. I think IOC is still trying to momentum. There is no confidence in this stock because candles are very, very small. वरना ज्यादातर bear market तो नहीं बोलूंगा, but after a corrective mode generally जो pullback आता है ना bull run, it's very, very fast. Surprisingly काफी slow है यहाँ पे. Reliance अगर मैं check करूं तो Reliance after the first pullback on 22nd of November, it is sort of looking like Nifty because it is consolidating, but does it have space a little bit more to go higher? Yes, it has, but what is happening is there are zones over here where probably there is lot of resistance, I think. So just be careful if you're trying. I am not a trader. मैं एक ऐसा trader नहीं हूँ जो pullback को trade करूंगा, but if someone is trading the pullbacks on the upside, just be careful. There is a lot of resistance in Reliance coming up over here. ठीक है? Looking at BPCL, I think BPCL is also in a pullback mode. Only thing is, again, we can see a inverted hammer or a shooting star आप बोल सकते हो over here, and this has come up due to this particular zone of resistance. ठीक है? Let's go ahead on the next sector, which is metal pack. Now, metal pack, if you check properly, one in the daily time frame chart, I think it is at a shorter term support, which is the 127.20% Fibonacci extension. And if you go into the larger time frame chart, in the weekly time frame chart also, we are at a support. Now, can this pull back? The answer is yes, but you need to understand that in metal pack, all stocks are not behaving very similarly. सब अलग-अलग तरीके से behave करें. So you can say Hindalco is in a pullback mode right now in the daily time frame chart. Even Jindal Steel is in a pullback mode. Tata Steel भी एक pullback mode में चल रहा है, and there is a lot of space over here. The main reason for that is there is no consolidation zone in the previous downtrend. So we may see some sort of pullback happening. Sorry for my voice. It's a little bit, you can say, pain in my throat today. Now, even at looking at sale, थोड़ा सा यहाँ पे गैप आपको दिखेगा, बट अदर देन दैट देयर इज सम स्पेस फॉर पुल बैक. और यहाँ पे तो आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखेगा. सो या देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्पेस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल ऑन द अपसाइड. सो overall it is still in a pullback mode. I'm not talking about a extremely strong uptrend or extremely strong medium term uptrend, something like that. No, I'm just talking about a short term pullback. Now, what happens after the pullback will be more important. Okay, that is something we'll have to wait and watch. Auto pack. Now, auto pack, if you have a look at the
monthly time frame chart, it is one of the strongest sectors which provided a lot of bullishness to Nifty, especially when it was going up. If you retrace from here, I think it is getting a very strong support at 23.6% retracement. Take this low also, it is getting a very strong support. So overall, I would say that in the monthly time frame chart, we are in an uptrend. Yes, it was a vertical uptrend. Yes, but I think uh, it's refusing to go on the downside a little bit more further. We can see a positive divergence over here. Not a very strong positive divergence, a weakish one. But what happens in the daily time frame chart will be very, very interesting to look at in the next few days. And looking at stocks like Ashok Leyland especially has surprised me, because this was one of the stocks जो मैंने बोला था 210 के नीचे गया, then I think it will start going down. And in fact, this stock has taken that level as a support और वहीं से ये stock ऊपर चला गया है. ठीक है. Now, if you look at Bajaj Auto, it's still coming down with very good momentum on the downside. Look at this stock. This stock was one of the extreme outperformers in the bull run. See the way it had gone up from March to June, but now it's trying to come down. So this is what is happening in the auto pack. Strong stocks भी नीचे आ रहे हैं. Eicher Motors is an exceptional. Eicher Motors I think consolidate कर रहा है वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे. अगर आप इसको और ज्यादा हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, जैसे कि 6 मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, इट विल लुक मच स्मूदर. बट इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा लास्ट 4 मंथ से it is just consolidating. So I will not comment anything on that. Hero Motocorp, one of the strongest stocks, not the strongest, but one of the strongest stocks. It has corrected. Now it's trying to pull back. And does it have some more space on the upside? The answer is yes, but you'll have to keep a check at this level of 49.90 or 5,000, because यहाँ पे previous low का एक resistance आ जाएगा. Maruti, again, if you see, one of the strongest sectors, it had gone up, but इसमें उतना ज्यादा momentum नहीं था जितना I think भारत Forge या Hero Motocorp में था. But nevertheless, it outperformed pretty nicely in early 2024. Currently, it is getting a support from this Fibonacci extension, and it's trying hard to pull back on the upside, but somehow it's not happening. So yes, थोड़ा सा space तो है ऊपर की तरफ. We'll have to find out whether does it actually pull back or not. M&M, again, it's right now looking a little bit different from other stocks, because there are many stocks which have corrected very badly. M&M on the other side, it has probably outperformed. Tata Motors, if I talk about it, has underperformed very badly, I could say, very badly. It actually needs a pullback, but at times when there is something negative happening in the stock, you cannot say anything. TVS Motors, yes, it has corrected. Is it in a pullback mode? The answer is yes, but it's not, getting that momentum. It's not going that one way up. Pullback is not happening. It's very slow and steady. And even if you have a look at the 2-hourly time frame chart, even the 1-hourly time frame chart, it's consolidating up and down in extreme short term. And maybe then it'll try to go higher. Okay. Now going up to finance pack. Finance pack, again, it is consolidating. It is sideways in the monthly time frame chart, in the weekly, and in the daily time frame chart. That's it. Okay. Consumption pack के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो कंजम्पशन पैक भी बहुत ही ज्यादा मोमेंटम के साथ ऊपर गया था, स्पेशली फ्रॉम अर्ली 2023, मार्च 2023 से लेके recent highs तक, which I think topped out in September 2024, and after that it has corrected. Now it's trying to find support at 38.20% retracement from the lows of 30th October 2023, and it's trying to pull back. And if you have a look at the list of stocks over here, okay, so Apollo Tires is in a totally different league. Maybe something really great is happening in the stock, or maybe something good has happened in the results, or what, I don't know, but it's outperforming very nicely. Asian Paints, you can see the plight of the stock, one of the very strong stocks, but from multi-month, it's not been able to surpass this particular high,
especially if you have a look at the 6 monthly time frame chart. At times 6 month time frame chart will give you a clear understanding that stock ज़्यादातर consolidate कर रहा है and it's trying to come down in the short term time frame chart. It actually needs to pull back very sharply, but it's not happening somehow. Berger Paints, it has corrected. It's finding support at 78.6% Fibonacci retracement. In the monthly time frame chart, the momentum is down, but overall it is choppy. So I think इस स्टॉक में ज्यादातर आपको वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ज्यादा एनालिसिस करना चाहिए, मंथली को ज्यादा नहीं देखना चाहिए. CG Power, I think it's consolidating in the monthly time frame chart, and in the daily time frame chart, it's just trying to find a support and try to go higher over here. DMart, extremely underperforming, a lot of divergences, but still not being able to pull back higher. Something is happening in the stock. ये देखिए, Godrej, again, if you see Havells, now see these two stocks, Godrej and Havells. यहाँ पे क्या हुआ है? Stock has found support at 61.80% Fibonacci retracement of this bull run, and it's trying to bounce back sharply. Not just pullback, but sharp pullback. Again over here, probably यहाँ पे भी कुछ support जैसा जरूर रहा होगा. If I try to extend this trend, okay, in extension we do have anything. Okay, yes, we do have this 127.20% fib extension. Just give me a minute. I'll just put it properly. Yeah, we do have this 127.20% Fibonacci extension, and you can see it's trying to pull back from here. Okay, and यहाँ पे I think so somewhere in this zone will start finding resistance. Again, Indigo sharp pullback. Naukri is going up because there was something very, very positive in this chart, but I never commented because overall market was not looking great. But anyways, let's keep it aside. Titan, again, pullback, Trend, Voltas. So overall, I should say in this entire sector, except for 2-3 stocks, जहाँ पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जैसे कि Asian Paints or maybe some other stock, something really bad has happened. Can see this stock, Berger Paint, even collapsing. So apart from this, I think all other stocks look to be in a very sharp pullback mode. Okay. FMCG पैक. Now FMCG पैक एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मैंने वीडियो बनाने से पहले थोड़े स्टॉक्स के ऊपर स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऊपर गया था. स्ट्रक्चर्ड यानी कि इट वाज नॉट वन वे अप, इट वाज गोइंग वन वे अप, कंसोलिडेशन अप, कंसोलिडेशन अप, कंसोलिडेशन. सो प्रॉपर मेथड से ये ट्रेंड हुआ है ये सेक्टर. नाउ द थिंग इज when it has corrected pretty sharply, but the pullback is happening equally very very sharply on the upside. मतलब आपको इंडेक्स देख के शायद उतना नहीं दिखेगा, इंडेक्स का चार्ट देखे, बट अगर आप इसके स्टॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, अगर आप इफ यू सी स्टॉक्स लाइक कोलगेट पामोलिव, सी दिस, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है एंड दिस कंसोलिडेशन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड सी दिस RSI हैज ब्रोकन दिस पर्टिकुलर लो and this pullback is happening. So I think we should take this pullback with a pinch of salt. This is just a pullback. This is not an uptrend. As of now, this is not an uptrend. हाँ, अगर ऊपर कहीं यहाँ पे breakout आ गया, it's a different thing. But as of now, it is just a pullback. Nothing more than that. Bata India also, it's trying to pull back after a sharp sell-off, especially from 18 October से जो sell-off हुआ था इसमें. Now it's trying to retrace on the upside. Britannia is also trying to do the same, but I think it's taking a little bit of time. In fact, अगर आप ठीक से देखोगे तो RSI in the weekly time frame chart is at close to 31, and daily time frame में तो ये 30 के भी नीचे चला गया था. I think it was below 25. It was at 2021. So I think sharp pullback can be expected. Dabur also trying to do this pullback mode. Hindustan Unilever pullback mode. ITC, it has done a very good pullback. Swing traders should keep a watch on the stock. Marico,
डेडली पुल बैक। समझ लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट रहेगा देन व्हाट विल हैपन विद दैट। सो इट इज 3-4 दिन में तो सीधा 1 2 3 4 सीधा मतलब 584 से लेके 653 टेरिबल पुल बैक, राइट। नाउ इन ऑल दी स्टॉक्स आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यहां से देखिए अभी नेस्ले इंडिया आल्सो कैन पुल बैक, currently it's trading at 127.20% Fibonacci extension. The stock has corrected from 27, अगर हम टॉप टू बॉटम इसको देखें, आई थिंक द स्टॉक माइट हैव करेक्टेड बाय क्लोज टू 22%। तो इसमें अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है इन दिस स्टॉक, इन नेस्ले इंडस्ट्रीज। टाटा कंज्यूमर को देखें, यहाँ पे भी इट हैज हिट अ सपोर्ट, and in the weekly time frame chart, in the daily time frame chart, there are clear signs that stock एक sharp pullback दे सकता है। The question is that क्या ये pullback एक uptrend में तब्दील होगा या नहीं होगा? I think this is a question, ये शायद आप सबके thought process में आएगा। मैं इतना ही बोलूंगा with my understanding of the market, whatever I have little bit, that this is not the time to gun go on the markets, to be extremely aggressive. At the same point of time, you should not also be pessimistic that this is just a pullback. I think you should just understand कि ये एक pullback है। pullback के बाद क्या होगा वो अपने आप प्राइस हमको बताएगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो probably traders will think according to that and trade according to that. And if it is a negative view after a pullback, then all of us will do the same, whatever needs to be done. So just watch the chart and avoid taking any biasness from that. All right. Going ahead, talking about infra pack, you can see that sharp pullback has happened over here. मैंने जो ACC अंबुजा stocks में मैंने जो negative view share किया था, I think they have pulled back tremendously right now. Obviously they would, because ऊपर से लेके नीचे तक ये 14-15% in a very short span of time correct हुए थे. Now looking at other stocks like Bharti Airtel, Encore, all of them are in a pullback mode. ये देखिए डालमिया भारत, sharp pullback, not just a pullback, sharp pullback. I think GMR Infra consolidation plus pullback. Grasim has already pulled back pretty nicely. HAL is a very nice stock. I think HAL में क्या हो रहा है कि HAL rather than retracement, it is not just retracing, but it's trying to retracement in the sense I'm talking about the monthly time frame chart. So it is not just retracing in the longer term time frame chart, but it is also coming down with a very, very slow momentum and with a consolidation. It is not a vertical fall. So sign of a strong stock, but nothing to do as of now. India's JK Cement, again, it pulled back nicely. L&T consolidating. Ramco Cements outperforming, one of the stocks which is outperforming pretty nicely. So more or less अगर आप ज्यादातर stocks को देखोगे तो ज्यादातर stocks pull back कर रहे हैं इस particular sector में, except maybe 1 or 2 stocks which are outperforming. Now, king of all the sectors, IT pack. क्यों मैंने बोला ये? आप सिर्फ देखिए charts को, monthly time frame chart हो, right? This one, चाहे weekly time frame chart हो, चाहे daily time frame chart हो, यहाँ पे इन्होंने consolidate किया, and then after the consolidation it retraced, and now they are trying to go higher. So this is one of the sectors which is helping Nifty to fall little bit less, and I think 3 stocks ऐसे थे जिनके ऊपर मैंने कमेंट किया था पहले भी, and I would like to talk about the same stock once again. टेक महिंद्रा, जो मैंने काफी दिन से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, the uptrend continues. And I think it's looking pretty strong even as of now. The second stock is TCS. TCS, yes, it has been able to outperform. It has been able to provide a breakout, but only problem over here for me as a trader is that it has not been able to provide a very clean breakout. What is the meaning of clean breakout? For me, clean breakout means a big green candle, something like this with lesser wicks on the upside and on the downside. So if you see, this particular candle is pretty big one, but ये जो दोनों candle हैं, I'm not very confident. Yes, price ऊपर जरूर गया, but एक big strong अच्छा candle होता तो
would be a much better thing. But anyway, the stock continues to outperform. And third one is Infosys. Infosys also continues to outperform. यहाँ पे थोड़ा सा resistance जो लग रहा था, it stopped the stock to go higher. First it closed, then it retraced, and now it is continuing to go higher. Pharma Pack. Unfortunately, Pharma Pack could not perform. मैंने 3 स्टॉक शेयर किए थे. Sun Pharma. I'll just like to open those chart of those stocks. Yeah, here it is, Sun Pharma. Sun Pharma, I think it gave a nice breakout in the early time frame chart, could not sustain. But to early time frame chart, nothing great happened. Torrent Pharma, I think it is little bit stronger than the other 2 stocks. And the third one which I shared was Lupin. So Lupin also, if you check, did not give a very great breakout in the 2 early time frame chart, but in the early time frame chart, it did provide a very good breakout, and then it corrected. So what do we understand from here is that something is happening in the Pharma Pack. And अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करें, और कैसा हुआ है कि एक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म नहीं किया, 3 स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया और सडनली आउट ऑफ 3 स्टॉक्स 2 स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म कर दिया. तो समथिंग इज हैपनिंग इन द फार्मा पैक. आई थिंक बी लिटिल बिट विजिलेंट. If this low is broken, I think in the pharma pack, I'll just go back to the index chart and share it with you. Okay, so if this low is broken in the pharma pack, if this trend line is broken, we start closing below it, then possibly we could see a little bit more corrective price action happening in this particular sector. PSE sector, I would say overall in a downtrend. This is just a pullback, and we can see very, very clearly that this is a resistance zone. Why? We have this 1, 2 lows and this third high over here. So if this price pullback continues and if it tests this level, be very, very vigilant and start seeing what is happening on the index chart of this sector and even in the stock. All right. Do not have preconceived notions. Just have a look at it. And whenever it's the right time, I'll keep updating in my videos. रियलिटी पैक वेरी इजीली आई थिंक दिख रहा है हमको, ज्यादा मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है. और ऑल स्मार्ट पीपल. ओवरऑल द मोमेंटम आई थिंक इज ऑन द डाउन साइड. ट्रेंड इज अप इन द monthly time frame chart, but the momentum in the daily time frame chart is not that great. Even in the weekly time frame chart, you can see, as per Dow theory, you can see this formation of lower highs, lower lows. It's clearly visible. Now, do we have this third leg or not? ये हमको पता चलेगा डेली टाइम फ्रेम चार्ट से. सो हैव पेशेंस. आई थिंक वील हैव कंफर्मेशन फ्रॉम द प्राइस इन नेक्स्ट फ्यू डेज. मिड कैप्स pullback continues, and I think so far so good. We'll see what happens. We'll see when price comes in this zone, especially because we have a previous high and a previous low here, right? So I think overall वीडियो देख के आपको इतना समझ में जरूर आ गया रहेगा दैट वी आर जस्ट इन अ पुल बैक मोड, नथिंग मोर देन दैट. यस, आईटी सेक्टर कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म. कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन देम. एंड ओवरऑल वी आर जस्ट इन अ पुल बैक मोड. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. विल दिस चेंज, विल इट नॉट चेंज? आई थिंक ये सब मैं फिलहाल नहीं सोचूंगा, बिकॉज मैं एक रिएक्टिव ट्रेडर हूं. मैं प्रेडिक्शन नहीं करता. When it changes and what needs to be done at that point of time is more important, all right, rather than predicting in advance के मुझे ऐसा लगता है ये होगा या वो होगा. ठीक है. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि मार्केट में क्या हो रहा है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वैल्यूएबल लगा, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ अदर ट्रेडर्स एज वेल. ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली. थैंक यू.